दोस्तों वेलकम टू Forexraja योर चैनल फॉर USDINR एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ और हमारे अगले लेवल से कंपेयर करते हैं जो लेवल्स मैंने कल दिया था। दोस्तों मैंने कल एक लेवल दिया था आपको 83.21, और अगर स्पॉट 83.21 के ऊपर रहता है दोस्तों तो मेरा अगला लेवल था 83.273, और अगर स्पॉट 83.273 के ऊपर जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा 83.34, और 34 के ऊपर मैंने आपको एक और नंबर दिया था। चलिए इतने पे बात करते हैं। आज 9 बजे का ओपनिंग दोस्तों आप देख सकते हैं, ओपनिंग हुआ 83.23 के पास, मतलब 83.21 के ऊपर तो था। तो फिर यहाँ पे मैंने वेट एंड वॉच किया क्योंकि 83.27 के ऊपर ही बाइंग बनती है दोस्तों, उसके नीचे बाइंग नहीं बनती क्योंकि रेंज में रह जाता है। और आप देख सकते हैं आफ्टरनून 3 o'clock तक रेंज पे था। उसके बाद 3 o'clock को 83.20 और 21 को फिर से टच किया इसने। टच करने के बाद फिर एक अप मूव आया। आप 6 बजे को शाम को देख सकते हैं, पहला आया नॉन फार्म पेरोल डेटा। नॉन फार्म पेरोल डेटा बहुत बुरा था दोस्तों, जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी बुरा आया तो डाउन आया। फिर 7:30 को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया दोस्तों, उसके बाद से एक अप ट्रेंड मारा। आप देख सकते हैं जब 83.273 को ब्रेक किया इसने, डायरेक्ट गया 83.34 के पास और यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। ये नंबर जैसे मैंने कल बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है, और इस नंबर को हमें पूरी आज ट्रैक करनी है क्योंकि इसके ऊपर अगर ओपनिंग होता है दोस्तों और इसके करीब 83.34 के करीब कहीं हमें ओपनिंग अगर मिल जाती है कल, तो अच्छी सी अपमूव आने की चांस है। क्योंकि ऐसे सिनारियों में, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, तो कल बहुत सारे पिछले पोजीशंस वाइंड अप हो जाएंगे दोस्तों या स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगर हमें ओपनिंग 83.273 के ऊपर मिलता है और 83.34 के पास कहीं मिलता है। ये देखना पड़ेगा कि अगर ये होगा कि नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए करते हैं कल के लिए एक छोटा सा ट्रेड प्लान, और ट्रेड प्लान को हम फॉलो भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है कल का ट्रेड प्लान। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल दोस्तों जो हम वॉच करेंगे कल के लिए वो है 83.273। ये नंबर बहुत ही अहम है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस नंबर के ऊपर रहा तो आप बाई साइड पे रह सकते हैं। पहला टारगेट आएगा 83.34, और 83.34 के ऊपर दोस्तों टेक्निकली डायरेक्टली 83.46 आना चाहिए। बट इसके बीच में आप एक और रेसिस्टेंस मार्क कर लीजिए, वो है 83.39। 83.39 के ऊपर 83.46। ठीक है, तो 83.39 हमारा इंटरिम रेसिस्टेंस बन रहा है, तो इसीलिए इसको ट्रैक कीजिए। अगर स्पॉट 83.27 के नीचे खुलता है दोस्तों तो पहला आपको सपोर्ट मिलेगा 83.21 के पास, और अगर 83.21 को भी ब्रेक किया दोस्तों तो अगला लेवल है 83.16। 83.16 के नीचे दोस्तों एक और सपोर्ट है 83.13, और 83.13 के नीचे दोस्तों 83.10। ये मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं नीचे के तरफ कंसोलिडेट बहुत हो चुका है। हर एक नंबर पे हमने सपोर्ट मिल चुका है हमें, तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा अपसाइड तो बाकी है एक नया नया हाई बनाने के लिए। तो जो भी सेल साइड पे रहना चाहते हैं उनको ये सपोर्ट वाला जोन फॉलो करना पड़ेगा। 83.21 के नीचे सेल करना पड़ेगा। जिनको भी बाई करना है दोस्तों, या जिनको लगता है डॉलर बुलिश है, उनको ये रेसिस्टेंस वाला साइड फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 2 लिंक है, दोनों में से एक कोई भी क्लिक कर लीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
Chaliye, now let's do the same analysis in English. Hi friends, welcome to Forexraja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's look at what happened today in the market and analyze this with our yesterday's analysis, right? So yesterday, friends, I had given you a very important level, which is 83.21, and I clearly told you that if spot is above 83.21, then we should see spot touching 83.273, and if spot is above 83.273, then spot can even go to 83.34, and above 83.34 I had given you another number, but let's discuss this out with just this much. At 9 o'clock you can see, friends, the opening was at 83.23, which is above 83.21, but it doesn't become the buying zone for us. Our buying zone was only above 83.273. So we saw that spot went up, did not break 83.273, again came down, took support near 83.21, and again once it took the support, it started moving on the upside, broke 83.27 after 5 o'clock, friends, at around 6 o'clock when the non-farm payroll data was announced. But the non-farm payroll data was very bad, because of which a slight downfall came. It did not break 83.21, and again at 7:30, friends, today the US PMI data, manufacturing PMI data came in, which is very positive, because of which spot again broke 83.273, touched 83.34, and is now hovering around this. So clearly, friends, in the last 3 days of my analysis, I've been telling you 83.273, a very critical number that has to be watched out, and 83.34, a breakout above 83.34 will surely confirm another new high for the dollar, for the rupee, or an depreciation for the rupee in the short term, friends. All right, that is something that you have to remember. So tomorrow, for us, it will be, for anyone who is holding, who is expecting dollar to be bullish, an opening close to 83.34 will confirm a good uptrend, or an opening and an opening below 83.273 will not confirm a good uptrend, friends, because day after tomorrow is the expiry, and before expiry a lot of premiums could be eaten up. So let's see what happens tonight in the US market and how the rupee pans out. All right, now let's look at the trading plan for tomorrow, friends, and for that I'll go back to my 1 hour chart. And all right, so this should be good for us in order to look at the chart. All right, so friends, for tomorrow also, a very important number that I'll watch out for is 83.273. Okay, if spot is above 83.273 or opens above 83.273, then the next target is 83.34. If spot goes above 83.34, friends, technically spot should go to 83.46. But in between 83.34 and 46, there is an interim resistance which I am giving, which is 83.39. Remember this resistance, so that it becomes easy for you to trade in case spot goes above 83.34. Okay. On the downside, friends, if spot opens below 82.273, then on the downside there is one support, which is 83.21, and if 83.21 breaks and goes on the downside, then it is very clear the expiry will be below 83.25, and hence the next level below 83.21 will be 83.16. Below 83.16 is 83.13, and below 83.13 we can even expect 83.10. Okay, so all these are the supports, and these supports are important for those people who expect the rupee to appreciate and the dollar to fall. And on top, above 83.273 and above, are the resistances, and this is for those people who expect the market to who expect dollar to be strong, should follow the resistances on the top side and should put each of these as their stop losses when they are trading. All right, friends, I hope you are liking the analysis. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, press the bell icon next to the subscribe button.
You'll get notified with my daily videos, friends. At the same time, if you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Just click on the any one of the link and you can join my Telegram channel free of cost. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye.